Hi everybody and welcome to my YouTube channel. आज हम सब Women's Day celebrate कर रहे हैं on Nabila Talks. So Women's Day पर अक्सर हम programs में जाते हैं, award shows में जाते हैं, celebrate करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम real women को involve करेंगे इस वक्त और हमारा जो show है Nabila Talks उस पर मैंने invite किया है 3 lovely ladies who are very close to me और मैंने उनकी जद्दोजहद, उनके struggles, उनकी real life growth and transformation अपनी आंखों के सामने देखी हैं and इत्तेफाक से they are all from a different generation. So I'm a baby boomer. We have a Gen X with us, which is Seraphine. She is managing talent, whether it's makeup artists, models, etc. for a long time and has been part of my company for at least, 20 years? Yes, last 20 years. Okay, so that's Gen X. Then we have Gen Y, which is also called the Millennials. And this lovely Rida, our brand manager for the Nabila group. But tell me what all you do. Okay, so I'm handling the brand and community for Nabila currently. Before that, I've worked at a few other places and it's been good so far. Great. And then we have Gen Z, Elsa, who is a very dynamic, rebellious young lady. And Elsa does many things. She is studying filmmaking. I know that she did plays when she was 16. She also does a lot of other things. Please explain. No, I'm a writer, I'm a director. That sometimes I write films, sometimes I write plays, so that's mainly what I do. Amazing. And I have been in the fashion industry for almost 35 years. I'm an image consultant. I started from hair, then makeup, then styling, and then image. And we run a chain of hair salons for ladies and gents. We have our own makeup called Zero Makeup and Not Giving Up Soon. So this is our story and I want to और हर एक की एक अलग struggle रही है, एक अलग journey रही है, एक अलग story रही है and I would like to start with Gen X and Seraphine. Tell me about yourself because these are all real women. You know, we have children, we have home, we have balance, you know, we have our own issues, struggles, pressures, etc. And I want to speak to you about आपकी journey कैसे रही है, what are the struggles you face, what are the expectations being a woman that you need to work on, enjoy, struggle with, etc. ज़्यादा स्ट्रगल तो उस वक्त रही जब आई गॉट मैरिड. काम तो कर रही थी लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं फिर वो लाइफ का आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह से होगी. आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था कि अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना, घर को संभालना और बच्चे की देखभाल करना. सो दैट वाज अ बिग प्रेशर एक्चुअली और काफ़ी टफ लाइफ रही. लेकिन वो बैलेंस मेंटेन करने में एक थोड़ा टाइम लगा लेकिन बैलेंस मेंटेन हो गया. बट एक वो गिल्ट रहता था बच्चे को टाइम ना देने का और काम का. लेकिन मुझे लगता है कि अब जब मैं बहुत आगे निकल आई, जो स्ट्रगल की, जो काम किया उसकी वजह से बहुत जो मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो आपने हासिल कर ली. तो अब लगता है कि वो सारा गिल्ट मुझे अब वो फील नहीं होता क्योंकि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है. नाउ शी इज़ ऑल्सो वोकल. मैं उससे बात कर सकती हूँ दिन में काम करते हुए वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसको मेरी कब ज़रूरत है. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है वक्त के साथ साथ वो गिल्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा होता था वो ख़त्म हो गया है. Exactly. तो when you know आप शुरू में कर रहे हैं, बच्चे जब छोटे हैं, तो आज मैंने एक वर्ड सीखा है which is called dual burdens. तो ये औरत जो है वो ख़ास तौर पे फील करती है. and me being a young working woman, जो बच्चे मेरे ग्रो हो रहे थे, while I was growing, while I was learning, while my business was growing, my kids were also growing.
तो मुझे बहुत ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत पड़ी एंड टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके। आई मीन आदमी भी तो ऑफिस जाते हैं उठ के, उनको तो कोई गिल्ट नहीं होता, लेकिन औरत के ऊपर ये प्रेशर है कि अगर आप काम कर रही हैं तो करें, लेकिन घर इग्नोर नहीं होना चाहिए, मियाँ को खाना टाइम पे मिलना चाहिए, बच्चों के सर में जुएँ ना हों, बच्चों के नाखून मैले ना हों, बच्चों के डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट पूरे हों, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो मुझे तो हमेशा डांट पिटती थी। तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन वंस आई सी what you mean is when you start seeing the fruits of it and when you start seeing कि हमने क्वालिटी टाइम दिया है, अगर हमने क्वांटिटी टाइम नहीं दिया, मे बी यू weren't there एज अ फुल टाइम मदर, बट एज अ क्वालिटी टाइम के जो फ्रूट्स आप देख रही हैं, गुड अपब्रिंगिंग और द वैल्यूज़ दैट यू इंस्टिल्ड in your daughter is very fruitful and rewarding at an age, and now you can forgive yourself for being the working woman. मुझे नहीं लगता exactly, हाँ, मुझे अब नहीं लगता इवन मुझे। और मैं जब ये इस गिल्ट में भी होती थी तो मैंने अपनी बेटी की कोई स्कूल की मीटिंग जो थी, टीचर पेरेंट मीटिंग, कोई मिस नहीं की, उसके कोई इवेंट्स नहीं मिस किए। मतलब whenever आई शुड बी विथ हर, मैं होती थी उसके साथ। सो अब वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं। और अभी भी आप कहती हैं कि घर जाके खाना पकाती? अभी मैं जाके ऑफिस के बाद जाकर मैं घर पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे घर के खाना, मेरे हाथ का खाना पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं लगता, बल्कि मुझे खुशी होती है। That's amazing, that's amazing. So सरफिन, आपको क्या लगता है कि आपकी ये स्ट्रगल देखकर आपकी बेटी क्या सीख रही है? एट टाइम्स उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि इवन मेरे संडेज़ भी ऐसे होते हैं, मैं फारिग नहीं बैठ सकती हूँ। आई थिंक मेरे साथ शायद प्रॉब्लम भी है, मुझे बैठना भी नहीं अच्छा लगता। तो वो एट टाइम्स तो मुझे वो लगता है कि वो मुझे किसी तरह से कह रही होती है कि आप आराम भी करो, आप बिल्कुल आराम नहीं करती हो, आप कुछ ना कुछ आपका प्लान होता है करने के लिए। और उससे मुझे लगता है कि वो शी इज़ गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। वो ये चीज़ें सीख रही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट जो है, दैट शी इज़ लर्निंग। और That's amazing you saying that, because that's absolutely true, and I feel कि हम जो बच्चों को कहते हैं ऐसे करो, they don't listen to us, they look at us, they learn what we are, how we behave. So subliminally आप अपनी बेटी को वो रोल मॉडल दिखा रही हो जो आप उसको बनाना चाहती हो. Is that right? that's right. And that's what she's picking up, because she knows that a responsible woman will do her job, will be a good mother, will maintain herself, will be a good human, and all of that. So by example, this is what you're teaching her, and that is the right message to inculcate or pass on to the next generation, I feel. That's amazing. Yeah, that's Thank right. you. Thank you so much. Thank you. So coming to you, Rida, you are Generation Y, also known as Millennial. आप मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं, how you started, what you do, and where you are going. Okay, so I would like to start with something that my mom says. मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती हैं कि बड़ी अगर ड्रामा लिख सकते होते हम तुम्हारी कहानी पे, तो थोड़ा सा वो ये हम उनको प्रोड्यूसर्स को दे देते। Oh, so we have to sell the story. Yes. So I was very young when my father passed away. I was only 17. Sorry. And 17 साल से जो है मुझे अभी तक याद है when it was very sudden. My father's passing was very sudden. मुझे एक दिन एक रिलेटिव थे, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ही अब जो है वो घर संभालना है, तुम्हें ही अब घर देखना है. I feel like at that point of time it made me realize कि how important it is for a woman to be independent. That's when I realized that was the point. Then when I was 17, moving on, I started taking on freelance gigs. छोटे-छोटे काम करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, तो I don't have to ask my mom. My mom was a working woman as well. She has been the support throughout. थोड़े टाइम बाद मैंने अगली अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब शुरू करी, तो at that time I was 21. जब मैंने वो स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं. Just because you're a woman, people don't really take you seriously. बहुत मुश्किल था अपनी पॉइंट अक्रॉस करना कि देखिए मुझे भी काम आता है, मेरे अंदर भी स्किल है. आई स्टिल, छोटा सा वाक़या है, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सोचा कि डायरेक्टली किसी जॉब पे अप्लाई करने से बेहतर है कि टीचिंग की जॉब क्यों नहीं ट्राई करें. तो आई रिमेंबर आई वेंट अप टू द स्कूल. मेरा इंटरव्यू हो रहा था. मिडवे द प्रिंसिपल एक्चुअली आस्क्स मी, शी गोज़ लाइक क्यों करनी है आपको ये, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, आप क्यों करना चाहती हैं. एंड आई रिमेंबर आई टीयर्ड अप एट दैट पॉइंट
एंड आई रियलाइज कि अकेले सब कुछ करना एज अ फीमेल इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई लेफ्ट दैट इंटरव्यू. मैं छोड़ के चली गई. मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती. आई वेंट बैक होम. अम्मी ने समझाया. माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव एंड शी वॉज लाइक नहीं यू शुड ट्राई इट अगेन. एंड देन आई फर्दर परसूड एंड देन प्रोफेशनली मैं चीज़ों को लेके चली. एंड देन आई बिन प्रिविलेज इनफ कि मुझे थ्रू आउट जो मैंने काम किया है मुझे फ़ीमेल बॉसेज ही मिली हैं. तो मुझे बहुत सीखने को मिला कि किस तरह से जो है ना फेलियर हो ना हो आपको किस तरह से उठ के खड़े होना है और वापस से काम करना है. दैट्स बिन माई स्टोरी. थोड़ा बहुत ये भी हुआ था कि लोग बहुत इंटरफेरेंस करते थे क्योंकि सिर्फ मैं मेरी बहन और अम्मी होते थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था मूव अराउंड करना कि एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करना. ये बहुत प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी है. तो इस बात से रियलाइजेशन हुई कि औरत के लिए जो है माशरे में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं कि नहीं बस औरत घर पे ठीक है यही कर सकती है आगे नहीं बढ़ने दिया जाता. So this is what. So because you didn't have a man in the household, आपको rental में भी problem बहुत problems हुई. Weren't taken seriously because there was no man. Like एक spine missing था. Yes. People were like, how will you even earn? So we always used to be like, based on our skills and experience, हमारे अंदर इतना है कि हम कर सकते हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमने करके भी दिखाया. मुझे याद है कि मेरे रिलेटिव्स ही होते थे. मुझे ए लेवल्स में उस टाइम पे आई कम्प्लीटेड माई ओ लेवल्स आई वाज स्टार्टिंग माई ए लेवल्स. मुझे कहा गया कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की शादी कर दो. कोई ज़रूरत नहीं है आगे जॉब क्या करेगी मुश्किल होगी फारिग हो जाओ एक लड़की से. बट आई केप्ट अप गॉट अ स्कॉलरशिप में पढ़ा है मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी साथ काम किया है. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती गई. And then now I'm here. That's so amazing. And your mother must have been that spine जिन्होंने आपको support किया कि आप पढ़ो. ये नहीं कि शादी जैसे आपने कहा ये है हमारे माशरे में कि फारिग हो जाओ जल्दी जल्दी टिक कर दो. इसकी शादी उसकी शादी तस्वीरें खिंचा ली जोड़े वोड़े बना लिए मेहंदी वेंदी डांस करो फारिग 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 फिर हज पे चले जाओ. और अगर कोई वापस आ गई तो फिर उसको नहीं आने फिर उसको वापस नहीं आने तुम्हारा जनाजा निकलेगा. बिल्कुल बिल्कुल यही माइंडसेट है. And it hasn't changed. So I'm so glad that your mother took this reign in her own hand and said कि रिश्ता भी हो जाएगा लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है. Exactly, इसकी बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो आई मीन ये जो हम हार्डशिप्स से गुजरते हैं इट मेक्स अस एंड इट मेक्स अस stronger. And you know what I see in you is that you are a very very ambitious person. You are very hard. You know it's very difficult to break you and I'm an awful person. You know I know how to like really pressurize people but I've always seen that you know you're always ready. If I say jump you say okay how high. So you're ready to go. You take challenges and you're very you know मैंने आपसे सुबह को 4:30 बजे भी बात की है. Whenever I message you reply in a second. You take flights, you're going and handling shows and shoots and brands and you know like I have never seen जब I'll be very honest when I saw you कि छोटी सी बच्ची हो अब ये मेरा दिमाग ख़राब करेगी. But what I have seen in you is that you mean business. You know, your height or your being petite or your being young is not stopping you because there is a fire in you. And I think that fire comes जो हम hardships face करते हैं और हम उस struggle से they say if it doesn't kill you it makes you stronger. Absolutely. So जब हम वो struggle से निकलते हैं तो आपको वो resilience आती है and hats off to your mom for bringing up such an amazing young lady. और ये जो आपके ब्लॉक्स आए हैं ज़िंदगी में उनमें किसी ने आपको रोका नहीं है आपको ब्रेक नहीं किया है बल्कि आपको गाइड किया है. एंड आई एम श्योर इट साउंड्स रियली इजी टू से दिस बट गोइंग थ्रू इट मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली टफ. बट ये मैसेज जब भी हम ये शेयर कर रहे हैं विद women, विद वर्किंग women, विद रियल women कि सच इज़ लाइफ. आपके पास हमेशा चॉइस है कि आप कहते हैं ना कि अगर आपके ऊपर कोई this may sound really rude लेकिन if somebody throws gobar on you you should gather it, make indhan out of it and fire. You know you should not give up and say कि हाय हाय ये गंद हो गया. No, get into it, don't avoid it, get into it, clean it up, make fuel out of it and go on, kick ass. Okay. Elsa, Generation Z. Hi. I know your story a little bit, but there are things that I don't know about you.
All I've seen is कि एल्सा मेरे आंखों के सामने पैदा हुई और पली बड़ी है. She used to be the literally blue-eyed girl, very, very spoiled, beautiful curly hair. And then all of a sudden I see this rock-solid woman who will criticize me, who will guide me, who will teach me. She made my Instagram account and taught me how to be on social media and doing amazing things. So Elsa, tell us about your life. So, like you said, I was my mom's youngest child. I have siblings who are 20 years older than me, and I was her second daughter. So when I was born, like, you know, बहुत गुड़िया गुड़िया लगती थी, सब मुझे बहुत delicate, बहुत प्यारी समझते थे. And that's how I believed I was meant to be growing up. और जब से मैं छोटी थी, सब यही बोलते थे इसकी शादी में करना इतनी आसान होगी, because she's so pretty, इतना आसानी से इसकी शादी हो जाएगी, such pretty children she will have, very easy to sell. Essentially, I was very marketable. मुझे इतना समझ आ गया था. Yes. But then, as I was growing up, I realized I really liked telling stories. Whether it was like, you know, drawing. जब भी मैं drawings बनाती थी, my mom tells me this अभी कि जब मेरी बहनें drawings बनाती थी और मेरे भाई बनाते थे, वो बस वो draw करते थे like sun है, घर है, ये हमारा family है. But मेरे पेज पे बस एक लड़की होती थी, एक दूसरी लड़की होती थी, and then I go to my mom like, इस scene में इन दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है, ये ड्रामा चल रहा है. So I used to love telling stories. And I loved acting in theatre, the opportunities that school gave. So as I grew up, I told my family, my sister's like, I want to be a doctor, I want to work for Apple. I was like, I want to be an actress or I want to write scripts. और सबके हाय हाय मीडिया कैमरा के सामने जाओगी एक्टिंग करोगी. Everyone panicked in my family because obviously I not obviously but I do come from a conservative background. अभी तक नानी के calls आते कि कहाँ हो, किसके साथ गई हो, क्या कपड़े पहने. And I think everyone can relate to this regardless of what generation you are. Yes. भाई को नहीं आते, सिर्फ भाई को आपको नहीं आते आते. भाई can be out for months, लेकिन मेरा every second of every day. And honestly, it's a valid concern क्योंकि you look at what's happening to women these days, तो समझ आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है. But so I said I wanted to go into film, and everyone's like, नहीं, आप इतनी छोटी हो, इतनी कम उम्र में, and you're so pretty. आपका वहाँ जाके क्या हो जाएगा, आपका क्या करेंगे? And I remember at that time, I don't know if you remember this, I was still complaining to you about this. कि, oh, I want to go in media, लेकिन मैं क्या करूँगी? And very Nabila line, what rubbish? आपने मुझे देख के बोला था कि just because you're a woman, you can't do this. And then I started looking at you and watching you from a very young age, and how you never let your gender hold you back. And so then I would think, हाँ तो फिर मैं भी ये क्यों करूँ? So then I went to my family and I was like, but I want to do media. They're like, 1 in a million people become Shah Rukh Khan. आप अपने आप को क्या समझती हो? I was like, okay, so I need to prove myself. So I was 16, 17 when I started writing plays. My first play I didn't tell anyone in my family. I just said, ये dates फ्री रखो, मैं PACC पे एक प्ले करूँगी, स्पॉन्सर्स में खुद ही करूँगी, एक्टिंग में एक्टर्स में खुद ही अरेंज करूँगी, स्क्रिप्ट में उर्दू में लिखूँगी. And I don't know if you can tell by this point in the interview or not, but my Urdu is not very good. So I think मैं उर्दू में स्क्रिप्ट लिखूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, and they're like, हाँ देखेंगे. And then I did the first play and it got really good. It was received very well, not just by the people who watched it, but in the news. And then it kept on building up. One of the How old were you then? I started writing the play when I was 16. It was 17 when it was produced. I was 17 when it was produced. And then it just kept on getting bigger and better. And then by like the time it was time for me to go to university, I'd gotten a lot of international acclaim. So my family was like, अच्छा ठीक है, she might be good at this. This might be something we can let her do. लेकिन बेटा कैमरा के सामने नहीं होगी. like नहीं कैमरा के पीछे होंगी, डायरेक्ट करूँगी, राइट करूँगी. So अच्छा, कैमरा के आगे फिर भी कंडीशन थी कि नहीं होंगे? हाँ ना, कैमरा लाइक इंटरव्यूज कर लो, ये करो, लेकिन प्लीज लाइक एक्टिंग तो नहीं करी हो ना, ये कब लाइक यू नो जो आइटम नंबर टाइप डांस है वो तो नहीं करी हो ना. लाइक नहीं ये नहीं हो रहा. नहीं. सो आपने अपने जो गिवन पैरामीटर्स थे या बाउंड्रीज थी उसके अंदर रहते हुए आपने अपने लिए एक जगह कार्व की, and you had to prove yourself, and I think all three of you had to prove yourself, and including me, you know, when I started work, उन्होंने कहा थे क्यों करना है आपको काम, you don't need to work. I was married to an industrialist at that point. I said I don't need to work, I want to work. And then they said कि चलो ये जोश है उतर जाएगा इसका. So I had to work doubly hard to prove them wrong कि ये कोई जोश नहीं है, ये कोई month का flavor of the month का mood नहीं है. This is consistent. And when I started to bring in more money than my husband, and consistently, I used to tell him, what you have is bread and butter, what I have is jam, you know. And that's how we could improve our lifestyle.
you know कि one person income is not enough today. आजकल की महंगाई में both parties need to work, and there's nothing wrong about being a full-time mom. You know, I wish I could be a full-time mom. Now I have a grandchild and I run from work to spend time with her because I want to be there all day. ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो औरतें घर में बैठती हैं और दे आर होम मेकर्स. इट्स डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. लेकिन कुछ आप अपने स्पेयर टाइम में कर सकती हैं, वेदर यू राइटिंग, वेदर यू आर डूइंग स्क्रिप्ट्स, वेदर यू लर्निंग यू नो हाउ टू हैंडल सोशल मीडियाज. दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू कैन डू एट होम, सिटिंग एट होम. यू नो वेदर आजकल तो बल्कि आई एम हेयरिंग, कल मुझे कोई बता रहा था कि दिस गर्ल इज़ डूइंग ग्रेन, यानी कि वो आटा जो है सुपर फूड से आटा बना के शी इज़ सेलिंग. देयर इज़ अ पर्सन ऑनलाइन जो आजकल ऑर्डर्स चल रहे हैं, स्पेशली थैंक्स टू कोरोना. हमने कोई वो एक्लेयर्स ऑर्डर किए तो समबडी इन गुलशन इज़ सेलिंग under 1,000 के dozen eclairs. There is Chinese food, there's Cowsways, there's fish, there's so many things, new things that are coming up. There's second-hand clothes. There's some ladies who are doing like itwar badar ke slippers and you know items online. So इतनी सारी चीज़ें हैं जो औरत घर में बैठ के कर सकती है to supplement their income. And I think अगर आप थोड़ी सी अपने आप को organize करें और टाइम, क्योंकि 24 घंटे एक बादशाह को भी और फ़कीर को भी 24 घंटे इक्वली मिले हैं. ये ऐसे नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा या कम है. तो अगर आप उसको ऑर्गेनाइज़ करें. आई रिमेंबर एल्सा's mother, my sister, she was 14 when she got married, which is a crime. It shouldn't happen. But I remember when she was 17, both of these girls were born, the boys were born at that time, both of the boys. And वो सारी रात बच्चे रोते थे, बहुत तंग करते थे ना. Young mother at 17, you don't know how to bring up children. और वो सुबह को 4 बजे जब वो सोते थे मुश्किल से, तो she used to study. और उसने अपनी ग्रेजुएशन की because 14 में मैट्रिक के बाद उसकी शादी हुई थी. And she had to finish her college. She learned how to drive. She learned a profession. She started earning. तो these are things that you have to do. अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करके काम करेंगे तो there is nothing that you can't achieve. Start small, start with something. आप सिपारा पढ़ा सकते हैं, आप मोहल्ले के बच्चों को सिपारा पढ़ाएं और इनकम या टाइम अपना, ज़रूरी नहीं आप पैसे के लिए करें, आप टाइम के लिए, आप गुडविल के लिए, आप फिलेंथ्रपी के लिए, आप हेल्प के लिए, चैरिटी के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं. और आप लोग जब लोग कहते हैं कि women are equal to men, I disagree with it. I think women are superior to men. That's right. Because we were made special. We are the ones who could bear children because we can endure pain. We can multitask. We can be really, really strong. And अगर आप focus इन qualities पर करें तो there is nothing that you can't achieve. सरफीन, आपने बहुत कम बोला. Is there anything else you would like to say? मैं ये कहूँगी कि हमारा हार्डशिप और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारी साथ साथ चलती हैं, लेकिन आपको ये सारे काम करके खुशी मिलती है. मुझे आज तक जो वो गिल्ट, मैं अगेन वही बोलूँगी, मुझे कुछ फील नहीं होता. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई एम मूविंग ऑन. और इसी तरह से रिवॉर्ड्स मेरे सामने हैं. और स्पेशली मैंने जो कुछ अपनी बेटी के लिए सोचा था कि मैं अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाऊँगी, इस तरह की एजुकेशन होगी, मुझे आज भी याद है. आपने मुझे एक सीडी दी थी सीक्रेट्स. उन दिनों में मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जा रही थी और आपने मुझे कहा था कि ये आप लेकर जाएं, और दैट रियली चेंजेस. और उसके बाद से मैं जो चीज़ फोकस्ड होकर करती हूँ मुझे फ़ौरन वो अचीव हो जाती है. So secret for people who don't know is a philosophy. It's about power of imagination, law of attraction जिसको कहते हैं. And I believe in that कि जो आप imagine करेंगे वही आप manifest कर सकते हैं अपनी life में. So as we discussed, you know, whatever you're doing, for all the women out there, whether you are a professional woman who does not believe in marriage, whether you are a married woman with children, choose to stay home, whether you are a career woman who wants to balance both of them, whatever suits you, just follow your dreams and live to the fullest potential. Again, I would like to say this is all my opinion. You don't have to agree with me, but I thought it was important to share it on this very special Women's Day occasion, and more power to you.